student see the image, whether it's a botany, zoology, or any kind of image in your exam, they actually, oh my God, I know this figure. They start recalling the in-person life. The looking at the image also providing the hint to an answer, right? So those who are teaching zoology, in a botany or any course that has a lots of image, don't be confused. Use lots of images in your exam. You know, I mean, this great job, right? Alright, so that's the advantage too. Now, let's look at the experiment, right? So, including, if you look at here, including more images in the anatomy exam resulted in a significant increase in the class average compared to the less images in the exam. And when you use the same number of the images in exam, there is no significant difference in the class average. So meaning that the inclusion of the quality images improve the understanding, knowledge, and the academic performance of your student, right? Number two, look, in the exam, when I give the image and when I ask the question based on the image, look at the percent rating of the individual question based on the information presented in the image, the student able to basically recall the information and answer the question, which is actually compared to the much higher than the question we are asked without images, right? So this experiment tells you the inclusion of the images improve understanding, knowledge, and also help the student to recall the knowledge of your courses, reduce the anxiety and also stress related to exam. Okay, second last strategy that I use is that I expose my anatomy and the physiology student to the various online class activities. So when my students are at home, I actually direct them to the online resources. I teach 700 muscles. It's impossible for me to basically teach all those 700 muscles. I develop an assignment where students practice on those muscles when they are at home. Number two, also I provide lots of practice questions based on the what I teach to them. When they are in front of me in my class, I engage them in the classroom. I actually put out them together, divide in a group, and give them what I actually call the matching question. Sometimes I also divide them together and give them topic. Hey guys, let's talk about the diabetes, right? And so the moment I give the topic diabetes, they start talking to each other. They look at the symptoms, they look at the causes, and that actually again bring them together and they interact with each other. They develop the communication skill and also develop the social skills, guys. So important, right? Number three, and also every chapter I teach, I actually assess their knowledge by doing the code, which is just I talk about, right? Number two, I also do a smart test for every chapter. And number three, I also divide the class into the in-class discussion and the group discussion, right? Now, let's look at this one. The results from this activity, as you can see here, clearly shows that exposure of the anatomy and the physiology student to the various online and in-class activity significantly resulted into the increased class average in all three phases and the final exam compared to the student who were taught by just the passing of didactic teaching methods. Okay, this is also result into the significant improvement of their activity. The advantage of using those activities are improve the academic performance. Number two, promote the academic, improve the communication and the social skill, and also develop the thing, and above all, the purpose of they are able to retain the knowledge of that particular chapter for very long time, and that should be the ultimate aim of your teaching life if you are teaching at the undergraduate institution. Okay. Last but not least, the last strategy I introduce in my classes to my students is called the content reinforcement. That's been repeating the knowledge of your course over and over. Every chapter I do, I actually keep on testing their knowledge for up to the 80. So example here, the cardiovascular. So repeated knowledge testing of the cardiovascular and the lymphatic system over 8-week period of time. You can actually see they started with a 68 or close to 68, and they are around 75 to 80% at the end of the 8 week, right? So forcing your student to go back to your chapter when you announce
those actually in class areas covered, they actually force them to go back to their chapter and keep reading over and over, which is good news because they become independent thinkers, they develop their critical thinking, and they also able to remember much of the knowledge they have learned, right? So, advantage of that one is to the content reinforcement can actually significantly improve the knowledge retention in the document, right? So, I am almost done. So, what do you do? So, everyone, the purpose of me being here is to promote or, so the purpose of here or my presence is to encourage you all to identify the knowledge gap in your classes or new subject and then develop the targeted intervention so that your student can remember the knowledge of your courses for a very, very long time, right? So in conclusion, if you are a professor who actually believe in the active learning, so your syllabus or your actually curriculum should include the blended approach, active learning, multimodal, and also the strategy that engage your student in the classroom, develop the active learning, make them critical thinkers, as well as help them to retain the knowledge of the courses long term, right? So, so that's all my actually talk today. But there are some of the students. So right now I have collaboration with the University of Malta, which is European country, where I'm actually going for the sabbatical next year. I also have my students. Those are my research assistants who actually help me in the summer when I'm traveling and doing my research. And then in a semester, I have an undergrad. So I not only develop the critical thinking, but I involve my own students in my learning process. Okay? So with this one, thank you so much for your time and your attention, and I will be glad to answer any questions you may have. How did you like a very happy session of Medicine for a Change, this very beautiful conference where we gather from all parts of India and abroad, and it is beautiful multidisciplinary, which I love, the concept. And yes, you may go off the theme, but you retain the creativity of presentation in international conferences. So, my takeaway from here is, I'm a little biased here because he is also my friend. And he is a brilliant teacher. Have you ever noticed what he showed just now is passion, nothing else. Unless you have passion in your life for anything you do, you can never succeed. And that is also his strength. I really envy his students because they are very lucky students who have a teacher like him. That is an example of a very good teacher. And we happen to have been in the health sciences, in Canada and I'm in Malaysia, and we crisscross. The whole idea is to gain knowledge. And do you know one of the best things he said today? This is basically a medical science class where we teach nurses. See, 800 pages in 26 hours is impossible. I'm a student of anatomy, and I'm going to tell you something. Honestly speaking, his best line was the last line, communication skills. Have you noticed me being a busybody here for the last 3 days? It's basically nothing. I'm communicating and communicating and communicating. And basically, who cares? I do, honestly. So when you start talking to everyone, whether you like the person or not, believe me, you become the best teacher in the world. So sir, may I have a round of applause for such a great guy. Thank you. And I will be more than happy to share my presentation with anyone who is interested. And anyone who wanted to introduce the active learning in your teaching, contact me. Don't hesitate. I don't charge. Yeah, just email me nice. Okay? All right, thank you. Domain of the skill development. Because the last year also have a good project report. Now this year have more elaborate, more expensive the presentation. Thank you very much. It's an observation there. Now India have a new education policy with knowledge. How to improve the skills in India. In this connection, I have a suggestion. India have a Indo-Canadian research
I'm sure. And trust me, we look forward to sign an MOU with you next time. In this spirit, whole India, private sector is there, government job is where the hospital management, doctor नहीं कर सकता, doctor. So, from the bottom of my heart, I would like to thank the chairperson and the keynote speaker for such a lovely, energetic session. And yes, Dr. Raj, at the end of the day, we all are teachers. We all are teachers. We should not forget it. And I'm sure we all try to do our best. So now, with a lot of gratitude and respect, I would like to call upon our next keynote speaker. Our next keynote speaker is Dr. Prem Adish Lekhi, who is a doctor from Perak, Malaysia, and the chairperson of the session is Dr. Kaginder Singh, Principal, Trinity College of Engineering and Technology, Kalpanagar, Telangana, India. आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत आप लोगों का अभिनंदन, and I would request the keynote speaker to start the session. A rare coincidence when the person gets to the next speaker. And incidentally, we happen to be in health sciences, so you please bear with me another 20 minutes of very heavy duty session. So normally, wherever I go, I do this because I'm born as an Indian. And when I come to India, I love all of you. So Namaste, India. So when this email came, we are doing something offline. Definitely the secretary service of the office, they will do all this. So I want to be grateful to these people, the organizers, Professor Muslim and Dr. Upender, Madam Mamta, for a wonderful job. And I just met this very great person, Dr. Tulani, right? And who happened to take this picture. And it all started that I already have done something like this before coming here in Malaysia, so I'm keeping a secret till the end. Normally, this is not a presentation, this is not even my work, this is my life. This is how I start. Because I'm going to introduce myself to you today through this presentation. Now, a very beautiful thing happened. If you notice, I'm carrying a lot of pen drives. So by incident, a wrong pen drive in my last conference went to a right person and it changed my life forever. Now, what is the story? There was this global forum for sustainable rural development, and the Americans have came to this Malaysia, and I was given 8 minutes, just like now you are giving me 20 minutes, and definitely I will be crossing it. So I'm giving you a forewarning here. So what happened? We started as usual. Then I said, sorry sir, this is not for you. Now this guy said, I want to see it. Now look at the beauty of it. So an American sitting in Malaysia saw Alwar for the first time in his life. And then they fell in love. And now what happens next will give you the shock of your life. Okay, then I have to introduce myself a bit, which I find, not honestly speaking, very important. The abstract you will read in this over here. This is my story. I'll go fast because I have 100 slides. And what actually I've come here for is because, okay, if I'm a medical doctor, so I did my work in hospital, in clinics, in medical centers. In fact, I closed shop. Now I had 2 choices in my life to go to academia or NGOs. Now NGO is a word kind of, I would say, underrated. But they are the only people in the world who actually done meaningfully, believe me. So I joined Doctors of the World in 1999. They won the Nobel Prize for Peace. And in fact, one of my friends was nominated to go to Sweden to collect it. Now, the beautiful part of it is when you join such organizations, you don't need passports. So you have white passports, they call it. You have diplomatic immunity, which means you can go anywhere you like. I came to Alwar, I can even carry 40 kilos. That is one thing. Now, being a medical doctor, now what do we know about it? Allopathy. Wonderful, isn't it? It's the best thing in the world. But allopathy is maybe a century old. And now we talk about Hippocrates old, which many non-medical definitely will not even know that this is. In 100 meters, we can open only one clinic. And I can assure you, the American was
standing and we had an argument. He says, when I come to India, 10 doctors in 100 meters. Because this country produces the youngest doctors in the world and the most doctors in the world. And also the place where the most of the doctors migrate, well, for obvious reasons, economic reasons is one of them. So are we not losing the best brains in the world when we need doctors here? Isn't that? Now, coming to United Nations Sustainable Development Goals, which is the theme of this conference. Now, I am very, and I said very heavily involved with the goal number 3. Now, this is called what? Health and well-being for all. They have not even written here. By 2030. And now it is 2023. We only have 7 years, and let me tell you, we are not going to achieve it. And that's what Americans like, because they said, at least there's someone who's speaking the truth. In the COVID-19, because I'm in the doctor's COVID-19 task force. Now, what is that? The Wuhan is still a mystery. I was talking to my friends this morning in the breakfast table also, and yes, we can go either side, pros and cons, dilemma, we can argue as we say till the cows come back, but we will not get the correct answer. Of course, it's camouflage by China and all that, but Americans are also believed. And then next one, I remember Bill Gates said, we don't need the Third World War. A virus is enough to wipe all of us from the face of the earth. Believe me. And he's right. Okay, we will go straight to the job now. Okay, this is my work. So I am from the Prime Minister's office where we do disaster management. And what happens there is, we are trained to go and face the storms. So where am I now? There's something called recovery and rehabilitation phase in the super typhoons that take place in Philippines. When you Google it, then you will find this country is full of storms, cyclones. They are very minor things. Typhoon is heavy duty, believe me. And they just have it there. Now, it's very interesting to read the newspaper this morning and say, oh my goodness, well, there's a disaster, there's a tsunami, there's an earthquake. Someone has to do the dirty work. Someone has to leave the comfort zone and go and face the storm. So that's me. I choose to do it, and I choose to do it with great love and happiness because I go to places where people can't pay me. And I don't expect them to give me anything. Because I did not become a doctor to get money, to become rich, or even to become famous. So I always tell, when I go to classes, I teach classes in Laos. Some people don't even know where is Laos. And over there, I asked the students, do you know the meaning of doctor? I did a class for medical students, and they just looked at my face, oh, never thought of that. I said, you want to become a doctor? Do you know the meaning of doctor? The doctor is not that you wear a white coat with a stethoscope and make money. Doctor means to teach. And doctor means to teach not to come to me. That was the gist of the whole story, that 100 years ago, when there were no doctors, there were no hospitals, there were no high-tech technology that was in this world, I think people were much healthier, you know. The Americans like this because they say, what you're saying is true, because we have become a mafia. So when I speak, I will make a lot of enemies. And that's what the people who were the elite group, the intellectuals, they said, finally someone has come out with some guts and come out on the stage and said, oh yes, someone is talking. Because if we do not stop this, the poor man, the poor woman can never see a doctor. A small girl comes to me in the Philippines and said, are you expensive? Honestly, there was a youth in my life. I said, this is how they see us. I said, no. He said, why did you come here? I came to help you. Why do you want to help me? I could not answer this. A child. And I said, well, I have to do some serious thinking. I only have one life. I'm going to go one day off. So better I take care of this profession that God has given me. So it's up to me to make my decisions. You do not have to follow the word. Now I will come to India. I come to Andhra Pradesh a lot. And now I come here. This is Philippines, everywhere Pakistan, and then Laos and all that. So in Malaysia, we go to private change. We have floods. From Delhi to here also there were floods. Half of my taxi was full. So which means, well, things are getting worse day by day all over the world.
Servers here? Okay. They were Canada, going to America, just before you know it. What is happening is climate change. I don't death valley is 50 degrees centigrade when you go to California. The death valley, you don't have to go to California, you just come to India. Already 50 degrees centigrade it has crossed. So and you may escape it. We are old, we are going to die, we are off, the next generation is going to curse. We are leaving what? What legacy are we leaving behind? Just imagine. Because okay, I have a good time, it's not my problem. We all have limited time on earth. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, friends, mind it, we're not here forever. COVID-19 taught everyone your money and your power, your connections are not going to help you. When the virus attacks. So when are we going to wake up? I may sound uncontrolled, I know that, but that's who I am. So here is a man with so much, you will know later, who I am. I went 5,000 years back to find the root cause of medicine. I became a medical historian. And I wanted to know, since I'm coming to India, I said, what did India give the greatest gift? Ayurveda. And you have very beautiful doctors now coming to Malaysia, all these kind of doctors, and Ministry of Health will open a new department. Because I'm close to the Indian High Commissioner in Kuala Lumpur, so the Indian High Commissioner asked me, please get people from India who are in allied health sciences, who are in complementary medicines, because we need to spread this to the world. Okay, I understand, here the East wants to go to the West, obviously. But the West wants to come to the East. And you are all great people, you don't even know your strength, you are sitting on a gold mine, and it is just that to tap it. Unfortunately, we are looking at the wrong side. And we know it. It works, allopathy works. Emergency, you need allopathy. But there are side effects. There are other issues. We have a doctor here from AIMS, the best has been in this country. He will talk at length about this subject. And he can argue with me, and he will be definitely right. But what about 100 years ago? We were not having so much development, right? But we didn't have so many issues like that. Have you ever thought of that? Pardon me? Okay, now, the big problem. It is small here, it is small there. I have to go there now. Alright. We all started yoga, right? 21st June. I was instrumental in Malaysia, supported by the Indian High Commissioner of Kuala Lumpur, who said, let's have a yoga day. Imagine. So I said, good. So I'm active. I teach Hindi in Malaysia. Look, I'm proud Indian. And I tell people, कोई शर्म नहीं है कि तुम हिंदी बोल रहे हो. अगर इंग्लिश बोल रहे हो तो स्टूडेंट नहीं हो जाओगे. या व्हाइट टाई या थ्री पीस सूट डालकर तुम अंग्रेज नहीं बन जाओगे. I said, be honest to yourself for God's sake. तुम्हारा सोल जो है वो तुमको धोखा नहीं दे सकता. सारी दुनिया तुमको धोखा दे सकती है. आपके अंदर कुछ हो. अब just imagine. So I was advocating this Ayurveda and yoga. Of course, there are other countries doing other work like TCM, because I'm involved in hospitals, so the TCM is traditional Chinese medicine. Okay, and then this acupuncture. You all know about that. Reiki, Western Germany नहीं है हमारा. So she will talk about Reiki. Homeopathy. We scoff at in India. Come on. Don't kid yourself. It's mainstream medicine in Germany. I was there in Germany and they said, look, it is mainstream medicine in Germany, and we scoff at it. Because we want allopathy. Sir, with due respect to you. We have to learn to respect things we don't understand, but they work. It's like that. So I became an activist, I became a fighter, and people start listening. Yes, you have a point here. So, sir, pardon me, oh well, I don't really know, because it's kind of glaring. And, okay, you know all these massages and millions of therapies and herbal medicine and aromatherapy and things like that, sir. To answer your question, you answer it. Yeah. Okay. We go further, like many people in the US who are basically, there's a paradigm shift now from modern medicine, allopathy, to all these therapies, as we call it. Yes, arguable, debatable, I understand.
answer all these questions. And for 2 days, I've been a very patient listener to all the stories. And I was thinking, there are a few people who came up with a lot of guts here and said, can we go back? Because I have the last slide which will really shock you, because it's a message from a very great person who is telling you, actually, if you want to go forward, please take 2 steps back. Nurses are doing it very heavy. These are nurses. And then doctors, and these are talking about US, they are really taking up naturopathy. Again, something very interesting that's going on there. Since I took up CAT, we do CAT scan, right? So it's a catchy something. But basically, I'm talking about complementing alternative therapies for a change. When we introduce these therapies, so, okay, allopathy medicine is the gold standard, remember. You cannot use Ayurveda allopathy from accidents, okay? You need the doctors in emergency medicine. So that is aggressive treatment which we need in emergency. Allopathy, it's biomedicine, 100 years old, it works. It will contribute. Nobody is replacing it, okay? Mind you. Now, how does this comes into play? There's something called acute or chronic illness. Acute, you understand me, so I go to the emergency, they save me. If I have to be saved, right? But chronic illnesses, they are actually being treated by complementary and ordinary therapies. Now the question is, allopathy will not respect you and it will not accept you. So it is, you walk on a very thin line, right? You understand that. But then, a lot of people in your brain and you have a choice to make in life and you know what is right and what is wrong and you take your decisions. Because I was in the US and they said, okay, listen, you are right because secretly people go to, we call it, other topics, other sciences. Because I want a second opinion, I want a third opinion. Basically, I want to be well and I don't care who treats me. Whoever treats me is my God. So I don't care if the doctor is big or small because he or she treated me. It's history. Now I'll be sending you all over the world and then you get good knowledge of what is and it's very short. Holism, something quite interesting. Theory and philosophy that focuses on connections and interactions between parts of the whole. There's something called a whole and then whole of your body and then the parts. So using a holistic perspective, there's something called holistic lifestyle, wellness medicine. Things are changing a lot now. The continual interaction and change means that the body is not the sum of its parts, but that it is a unified dynamic. So holistic philosophy is a philosophy. It underlines many that achieve any part of the organism will be reflected in other parts. So they have their nursing practice and they have their own, as we call it, basically complement them. So this comes under the integrative care. So a CAT consists of large variety of therapies that are based on a set of beliefs different from those of allopathic medicine. Modern medicine doctors, I'm telling you, because you know, medical students 50 years ahead of us. Why? They got independence in 1776. We got independence in 1947. So there's nothing to be ashamed of, so we should take time for us to even understand this. This is, I would say, much beyond its time. So many may not even like it or accept it, but if I showed it like, you remember that Ram movie, Viranam Joker. It failed when he was alive and became a superhero when he died. So some shows are very difficult to understand till you understand when the time has gone by. So some of these modalities have developed fairly recently. There's something called guided imagery. I know it in modern medicine, while others have been used for thousands of years as components of ancient healing. So what I'm touching on, because I'm aware I'm in Alwar, Rajasthan, India, and this is actually your gift to the world, which you don't even know. So some therapies can be used effectively. Great.
without assistance like nutritional approaches. Come on, every home has vitamins. Every home in the whole world. What is that? Is that modern medicine? That's a part of the cat. Naturopathy, we use all kinds of naturopathies. So doctors, they need to have knowledge for this. Of course, they are telling people to be trained. So it's not uncommon for the individuals who retain the African healthcare practices, or they reside in the United States. Okay, let's go like that. All of us are educated. I think about rich also, when we are dressed and we are in the right place, and so we feel very happy, right? And we are exposed to the modern lifestyle. Go back to your mother, go back to your grandmother, go back to your great-grandmother. They have not been so much lucky or educated or classic. But they had one thing we don't have. They had wisdom. They still knew how to cure us. Isn't that enough proof? I always argue with the modern medicine people that look, are we actually progressing? Because we do not love the truth. We are trendy. Okay, now trend ऐसा है तो हम ऐसे करते हैं without using our own brain. क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा करेंगे. You get me? There was this cartoon I was talking to my friend this morning. You know it. Okay, nothing new. In Malaysia, they showed the definition of India. Look, definition of India. अब India बाहर कैसे दिखता है? There's a line of a row of people standing in one line, and there's a well, and पहले आदमी कूदता है. फिर उसके पीछे दूसरा कूद रहा है, फिर उसके पीछे तीसरा कूद रहा है. Then suddenly somebody stopped the reporter. आप क्यों उसके अंदर जा रहे हैं? वो पहले वाला जा रहा है. वो पहले वाला जा आपने पूछा कि वो क्यों कूद रहा है? नहीं. क्या बोलते हैं इसको? भेड़चाल. We just follow without thinking. और दूसरे आदमी कहीं बोल दिया कि अरे क्यों? You know what happens? तो कब तक चलेगा ये सब? So, maybe I come here, maybe you will not want to see me again, but let me tell the truth. जैसे वो हिंदी का truth था, कोई डायलॉग था, सच तो कोई सुनना चाहता ही नहीं. अब मैं सच बोलूँ तो करवा लगेगा सबको. कौन नहीं करता योगा? कौन नहीं करता मेडिटेशन? ये स्पिरिचुअल कंट्री है. मैं मेडिटेशन हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है. It doesn't teach necessarily. You get me? मैं वेस्टर्न लाइफस्टाइल नहीं कॉपी करता, ये मेरा चॉइस है. So you don't have to madly follow something which doesn't fit into your system. You don't have to, वो क्या बोलते हैं? Don't have to impress the world. But you have a right to express. मैं बोल रहा हूँ, मैं express कर रहा हूँ. हो सकता है वजह लगे, हो सकता है बता चले. वो तो आपकी मर्जी है. So this cat, as I call it, there are no stress reduction techniques. Now in hospitals, the hospitals I come from, I was born in that hospital and I work in that hospital. Just imagine. तो वहाँ पर ये focus breathing, meditation, imagery, biofeedback, ये massage, ये सब हो रहा है. Along with OPDs, outpatient departments. IPDs, indoor patient departments, जो भी पैरल चलता है. अभी इंडिया में वो नहीं है. So they all recommend ऐसा करो. बहुत से पेशेंट मेरी लाइफ में, मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, वो आके ये बोलते हैं सर एक्चुअली मैं बीमार नहीं हूँ. कभी हिंदू एक ही डॉक्टर है यहाँ पे इंसिडेंट में करता हूँ, सब हजार लोग बैठे होते हैं. तो मैंने कहा मुझे देखिए क्या, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है. ये ट्रुथ है. हमें कॉन्संट्रेशन मिलता है, काफी दोस्ती कर रहे हैं. बताइए ये सच्चाई को कौन बोलेगा? ये तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम सही कर रही हो, कोई बताएगा आपको. All right, I go beyond it. So you can this person basically contribute to a lot of wellness and health, and it works. So why should we all try it if we can? अभी उन्होंने सर्वे किया कि 30 किलोमीटर वहाँ पास डॉट पल्स में उन्होंने देखा कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है. तो ये तो अच्छी बात है. देखो वरना थेरेपी एंड प्रेयर अब वो तो स्पिरिचुअल है, फिर आउट ऑफ फैशन है ना. हम छोटे थे मंदिर में जाते थे, आजकल तो मंदिर में जाओ पागल हो गया. सच है, कलयुग है. I was not born yesterday. मैंने दुनिया देखी है. हम बात कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं, और फिल्मों में जाकर तालियां बजाना बहुत आसान है. इन्होंने बोल दिया, अगर कुछ स्टेज पे बोले अरे यार क्या बोल रहे हैं?
सच्चाई को समझने की कोशिश तो करना चाहता नहीं, we don't want to improve, so you want to die short. अब बोलने कभी 100 साल में अब सब लोग बीमार हैं, ऑनेस्ट क्या करेंगे? कोविड-19 का एग्जाम्पल था दुनिया को दिखाने के लिए कि हेलो कुछ भी काम आने वाला नहीं है, जिस कुछ तुम भाग रहे हो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, लेकिन अब वो सब चला गया है, तो everything is back to square one. I'm very sorry to say. नेचुरल मेरे साथ में मैं तो एक स्मोकिंग कैंपेन करूंगा ना, अब स्मोकर से डबल हिट नहीं, तो फिर मैं कंपनी के पास पैसा है, और वो इमेजिन करो वो किसको स्पॉन्सर करे, स्पोर्ट्स को, ऑफ ऑल थिंग्स स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्समैन को तो स्पॉन्सर करना नहीं चाहिए, भाई ये कोटे जा रहे हमारे क्लास में, उन्होंने कैंसर हो रहा है, लेकिन हम स्मोक करेंगे। I'm sure forgetting to know all these things because they मेरे विचार आपसे बनते हैं। अब इन्होंने अमेरिका को जर्व किया, ये अमेरिका का, मैं बताऊँ आपको सच्ची बात, अमेरिका बिगाड़ रहा है सबको, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, जाओ भाई जरूर जाओ, मैं तो $US कमाओ, बड़ी बड़े सब करने को होता है, मारा मत जाओ अमेरिका में, अब जरूर जाओ, मैं किसको नहीं करता, लेकिन उसका लाइफस्टाइल को देखो, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, लेकिन वो पैसे की वजह से ना हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। So there are more medical systems, mind body therapies, energetic medicine, biological field practice. Look at the in India now, some kind of going up beforehand. Yes, I understand the time. Okay, I'm very fast. Now let's go further. आयुर्वेद जो आपको पता है सबसे ओल्ड वेदा तो हमारा आयुर्वेद है, तो चलो मैं खुद यहाँ से अलवर से दवाई लेकर जा रहा हूँ अपने बाप के लिए, और मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं अलवर से आयुर्वेद के मेडिसिन लेके जा रहा हूँ, क्यों? हमको लगता है ठीक है, और आप कहोगे हम तो दिल्ली में जो हाई स्टेट में हॉस्पिटल खोला है वो डॉक्टर 5 लाख लेता है, हमको आ जाएंगे तो जरूर जाएंगे, ये तो आपकी जिंदगी है ना, आपको समझना है वो क्या है। और सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब योगा तो ये सब करते हैं, लेकिन फिर हमको तो जिम जाना है ना, हम योगा तो करेंगे। अभी नर्सिंग काउंसिल अभी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो उसमें दुनिया हंसती है, ये स्मोकिंग गंदगी नहीं करना है, लाइफ का ट्रेंडिंग है, हम मॉडर्न नहीं है ना, तो आप तो एंशिएंट दुनिया के अंदर आपका लाइफ है आजकल की दुनिया के साथ है ना हो। ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन उधर बहुत पॉपुलर है, और ये नहीं है कि कोरिया में बहुत पॉपुलर है, एक्यूपंक्चर में बहुत चल रहा है, आई एम श्योर यहाँ चलता है। अब अफ्रीका कर रहा है, अफ्रीका में कौन सा है, हमारा जिला नहीं है, शैमनिज्म बहुत उधर है, नेटिव अमेरिकन बिलीफ्स है, होम्योपैथी मैंने आपको बोल दिया है, नेचुरल रेसिपी है, और chiropractic medicine something quite different, mind body modality relaxation में, autogenic training relaxation technique, you know something called auto suggestion मैं आपको बोल देता हूँ, because I am a sportsman and I do a lot of running. आपको बताऊँ कि ओलंपिक्स में किसी को बोल दिया गया था कि वो कैंसर है तो मर जाएगा, and that fellow won the Olympic gold medal, और डॉक्टर को उसने फेल कर दिया, बोला कि no I can do it. तो maybe you are getting a message कि चलो इस बोर्डिंग प्रोग्राम से कुछ तो सीखा होगा आपने, कि देखो दुनिया की बातें मत सुनो, अपने अंदर सुनो, बेस्ट डॉक्टर, who is the best doctor? You are the best doctor, सच्ची बोल रहा हूँ, ओके आपको पता आपकी बीमारी क्या है। अब गाइडेड एक्टिविटी ना हो, I need a long time of this, हीमोथेरेपी, ये लाफ्टर क्लब तो इंडिया में भी है, यूपी से कौन है? लाफ्टर क्लब तो इंडिया में शुरू हुआ है, और लाफ्टर क्लब इंडिया में इतने नहीं है, बाहर बहुत ज्यादा है। 6 बजे उठकर हम लोग जाते हैं, बाहर जाकर हाँ करते हैं, क्यों? क्योंकि हाँ बंद हो चुका है, टीवी है, मोबाइल है, घर में शोर शराबा है, बच्चों से तंग है, जाते हैं। सो बोलते भाई हंस लो, बात करो। Yes, I may look a joke now, but it will remember me. So aromatherapy है, अब यहाँ नहीं, वाक्स जर्मन में बहुत है, energy medicine modalities हैं, always just go through it. All right, I have to go very fast. Manipulative practice शुरू हो गई है, references है, तो ज़्यादा बताना चाहूँ मैं कौन हूँ। तो there's something called UNODC, United Nations Office है ड्रग्स एंड क्राइम का। मैं मलेशिया में हूँ, तो ये थाईलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अमेरिका ने मेरे को बोला कि तुम थाईलैंड जाओ, मैं क्यों भाई, मैं तो इंडिया जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, गोल्डन ट्रायंगल थाईलैंड में, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जो कंट्रीज है, वहाँ से बहुत ड्रग्स आ रहे हैं और बहुत बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पर नहीं है, सब दुनिया में है। सो अब
अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्लिनिक में कंडीशन में बैठकर 10 लाख कमा सकता हूँ, बड़ा मस्ती है, मेरे को क्या दुनिया में क्या है। तो या मैं ये फैसला करूँ कि नहीं, आई वांट टू डू समथिंग। दैट्स व्हाई आई एम सो हाईली क्वालिफाइड पर्सन। मैंने भी देखा है ऑलवेज ही विल बी एस्कॉर्टिंग पीपल अप देयर। सच्ची मैं बोल रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट दिस गाय। आई सेड लुक a gentleman कि भाई he is demonstrating to the youngsters कि भैया अपना ईगो छोड़ो कि अगर हम वो हमसे बड़े हैं, भाई सर आज इनसे ब्रेकफास्ट करा था, अरे लाइक मैं बोला प्लास्टिक का आपने बात की, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। आप 76 किलो तो कम से कम मेरे से बड़ा तो कोई है, ये what I'm trying to say। So सोना बनाने या डायमंड, आप सब लोग डायमंड्स हो, आप खुद नहीं जानते, आप अपने ग्रेटो कैप दो अपने अंदर। Alright, this was done and it's okay. Okay, I'm so happiness really does grow. हाँ, अपने से बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा देखो, ये बाकी क्लियर आपके पास है। अब यहाँ देखो, unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. Believe me. मुझे बोल जाओगे, मेरा स्पीच बोल जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी। So you may say I am a dreamer, but I am not the only one. देखो कोई ना कोई बात तो दिल में लगनी चाहिए ना। अच्छा ये कुछ बात बताएंगे। अच्छा अभी मैं वो फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स इन मेडिकल साइंस में ऑफर हूँ, तो मैंने सोचा कि मेडिकल साइंस को थोड़ा बढ़ाया जाए। अच्छा ये मैं तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ। क्या है? I wish every one of you, okay, I have ever met on my journey, nothing but peace and love. Whether we separate on good, bad or indifferent terms, I wish you well. I wish you success. May you find what you're looking for. ये मेरा गिफ्ट आपको। अच्छा मैं अपने बर्थडे को अच्छा काम करता हूँ। मेरा बर्थडे जून 7 को है, तो हम लोगों ने वहाँ सस्टेनेबिलिटी एक फेस्टिवल किया। तो आप एसडीजी की बात कर रहे हो, तो वहाँ फेस्टिवल किया सारा 26 मिलियन लोगों को ये बताने के लिए भाई कुछ हो रहा है दुनिया में, जागो। ये गौरव में हुआ था। अच्छा ये मैं हूँ भाई साहब, तो कभी कोई टी शर्ट डाल देते हैं, तो क्या है ये इंटरनेशनल योगा डे बनाया, तो इंडियन हाई कमीशन जो गवर्नमेंट ऊपर है, बोला इंडियन टैक्स हो रहा है, कुछ इंडिया का भी करो ना। तो मैंने कहा चलो भाई योगा करते हैं, कोई तो आएगा अच्छे अच्छे स्टूडेंट। देखो बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन पॉइंट होता है अपने कंफर्ट जोन से निकलना। सो हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने मनाया होगा, देखिए कितना अच्छा लिखा है, लाइफ इज प्रेशियस, every life is important, you are that flag bearer of hope, you who never let us lose hope in life, you hold our hand in most difficult of time, thank you doctor। अच्छा ये तो इन्होंने भेजा, ये हम हैं, तो ये मैं हूँ, मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ, मेडिकल डिवीजन है, तो एक नया चीज शुरू हुआ साउथ ईस्ट एशिया, उसको बोलते हैं हेल्थ केयर विदाउट हार्म। मेरा पहला फर्ज ये नहीं कि तुमको ठीक करना है, मेरा पहला फर्ज ये है कि तुमको हार्म नहीं करना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करना। डॉक्टर का पहला फर्ज ये होता है। और डॉक्टर्स कोविड-19 में मैं मलेशिया में हूँ। अच्छा ये हमारा टीम है, तो 15 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ, कैंप्स लगा रहा हूँ, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ उसी ब्लड जो बैंक है उसको रोज 1500 ब्लड चाहिए और हम इकट्ठा करके देते हैं। तो इसके लिए बाबा ने हमको अवार्ड दिया। अच्छा अब देखिए हाउ आई एम हेवीली इन्वॉल्व्ड इन द वर्ल्ड, कि इसको बोलते हैं ग्लोबल गोल्स समिट। तो मैं स्पीकर हूँ, तो इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में यूथ को बुलाता हूँ कि आओ भाई तुम फ्यूचर हो, मेरे चला जाओ एक दिन, कि तुम खड़े हो मेरी कुर्सी पर और मेरे से भी ऊपर उठो, मेरा सक्सेस ये है। तो फिर ये समझ करते रहते हैं। तो मैं पॉडकास्ट में हूँ, तो वो बोलते हैं कि कुछ करो, मैं अच्छा राइटर, स्पीकर, मेडिटेटर, मोटिवेटर, इन्फ्लुएंसर, ऑल दैट। तो द होल आइडिया इज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बिफोर आई लीव, बिकॉज़ आई नो आई एम टेम्परेरी। ये देखो सर, जिसके लिए मैं आया हूँ 5 मिनट जहाँ पे बैठा, अरे ये पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अच्छा तो आई एम इम्प्रेस्ड, मैं जानता हूँ पॉडकास्ट को, मैं बड़ा इम्प्रेस्ड इसका। तो अब क्या बोलते हैं, जो हिंदी को आती है, चलो गाय की ओर, चलो गांव की ओर। अब एक ही बोल सकता हूँ, let us go to the town, to our villages, towards nature. ये बड़ा लिखा है। He has said something very beautiful, अगर आप पढ़ सको। कि भाई, हाँ, आप one say if you can, reading है। So I am impressed. Actually, in the whole social life है ना, मैंने इनको देखा, मैंने इस बात को समझा, तो I made something around it.
मैं कहा इंडिया जा रहा हूँ, तो आई वांट टू समथिंग लाइक दैट। अब देखो वो बोलती चाय वाला है और देखो आज हम बैठे, तो मैंने कहा मैं तो चाय नहीं बेची, तो मैं तो अच्छा काम कर सकता हूँ ना। तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ है। तो अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसके लिए सर रिकॉर्डिंग आपकी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग कर दी मैंने। भगवान को आगे कुछ नहीं करना इसको। तो बस ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था। ये क्योंकि मलेशिया को पूरी एशिया बोलती है, प्लीज आओ देखो, घूमो फिरो, दुनिया को देखो, लेकिन समझो। लेकिन मैं उनसे ये बोलता हूँ प्लीज वो सब कुछ ठीक है, एंड में अपने आप को समझो। Hello. Good morning to all of you. First, thanks to Dr. Prem sir for lovely presentation. मैं इंजीनियरिंग विभाग से ताल्लुकात रखता हूँ, इसलिए मुझे मेडिकल का बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर जो थेरेपीज और बाकी चीज़ों का उन्होंने बताया तो उसके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग बीमार नहीं हैं एक्चुअली, हम लोग मेंटली बीमार हैं। इसके एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो मेरे पिताजी कभी कभी मेरे साथ रहने के लिए आ जाते हैं मेरे पास, जनरली मैं अकेले रहता हूँ। तो सुबह 7 बजे उठे और उन्होंने फट से टीवी चालू किया। बोले बेटा टीवी चालू करो, क्या हुआ? बोले अरे वो बाबा जी का योगा आ रहा होगा। तो उन्होंने चालू किया, अब बाबा जी लगे अपने योगा में और दुनिया भर की चीजें बता रहे और हमारे पिताजी खुश हो रहे कि उसके करने से शायद मैं ठीक हो रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है हमारे कंट्री की, होम कंट्री की। हम लोग ये सोचते हैं कि बाबा जी जो वहां कर रहे हैं उससे हम टीवी देख के ठीक हो जाएंगे, जबकि जरूरत है कि वो टीवी बंद करके बाहर निकलने की। तो मेरा निवेदन ये है कि मेडिसिन, थेरेपीज, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं यहाँ, लेकिन जरूरत है नेचुरल थिंग यूज करने की, अपने आप को यूज करने की। हमारा बॉडी अपने आप में एक मेडिसिन है, यदि हम इसको सही यूज करेंगे, सही खान पान करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने आप में फिट रहेंगे, फिर किसी तरह की हमें कोई थेरेपी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद सर, आप मलेशिया से आए और हम लोगों के बीच में, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि मैं कभी इंजीनियरिंग के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। तो यहाँ आकर के मुझे कई चीजें पता लग गई कि भाई ये भी होता है दुनिया में। तो धन्यवाद आप सभी का, सभी लोग मेरे सीनियर्स आशीर्वाद दें कि अगली बार भी हम सब मिलें और कुछ नया सीखें। थैंक यू सो मच। Our keynote speaker and the chairperson for such a lovely and beautiful session, and definitely Dr. Nagendra Singh, I do agree with you. Whenever we are lonely and we are working in our subjects, we really don't know what is happening outside. We are too much into the weather. But yes, when we come into the conferences and meet people from the different parts of the world and different faculties, it's a new era beginning. So thank you so much for such a lovely and beautiful session. So our next keynote speaker is Dr. Nagendra Singh, Principal, Trinity College of Engineering Technology, Karimnagar, Telangana, India. And the chairperson of the session is Dr. Raj Singh Silvaraj, but he is not here, so I will request Dr. Madhurit to come on the stage and chair the session. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन सर। आपका भी स्वागत। Respected Principal sir, Chair session sir, and all listeners, and my topic is reduce, reuse, recycle with electrical system. हम सब लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं डेली लाइफ में। अब मैं इसको थोड़ा सा इन्वायरमेंट के साथ ऐड करूंगा कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, है ना, और इसके पीछे प्रॉब्लम कहाँ है। हम सभी प्रॉब्लम है एक्चुअली जो बैठे हुए हैं, मैं ये प्रूफ कर दूंगा थोड़ी देर में कि ये जो मैंने टॉपिक लिया है और इसके पीछे जो वजह है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो
सबसे पहले तो बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक सर्विस है। जैसे आप रेल सर्विस लेते हैं, बस सर्विस लेते हैं, फ्लाइट सर्विस लेते हैं, ये सभी क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। और हम जो है उन सर्विस प्रोवाइडर को भी सर्विस दे रहे हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक के बिना आज लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते आप। यदि कर सकते हैं तो बता दीजिए। अब बात आती है कि मेरा पहला जो यूज है कि रिड्यूस का क्या मीनिंग, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ। मैं यहीं से एग्जाम्पल शुरू करता हूँ। मैं अपने रूम में था, इतनी लाइटें जल रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा बंद करूं कहां से। और इसका यूज क्या है मेरे इस पूरे रूम में? मैं तो अकेला हूं। क्या सारी लाइटों की जरूरत थी उस पूरे रूम को इंटेंस करने के लिए, या जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए लगा दिया गया कि ताकि इस रूम का चार्जेस ज्यादा किया जा सके? आप ये सोचिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आपको 5 से 6 रुपए में मिलती है पर यूनिट पर आवर चार्जेस 5 रुपए 6 रुपए मैक्सिमम रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या रहती है? अराउंड 1000 रुपए पर यूनिट। अब सोचिए गवर्नमेंट किस तरह से हमको 1000 रुपीज की चीजें 5 रुपए में दे रही है, इसलिए हमको उसकी वैल्यू नहीं है। अब जब वैल्यू नहीं है तो मिस यूज करते जा रहे हैं, ये सोच करके कि हमारी लाइफ तो बढ़िया चल रही है ना, हमको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस रखा कि एनवायरनमेंट बचाइए, किसी ने कहा जानवर बचाइए, ये बचाइए, वो बचाइए। भाई साहब हमें कौन बचाएगा? हमें हम आप ही बचा सकते हैं। आपको मैं एक मोटी चीजें बताना चाहता हूं कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है। 57% इलेक्ट्रिसिटी ओनली थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है। रिमेनिंग जो सोर्सेस है हाइडल पावर प्लांट या सोलर पावर प्लांट, उनका यूजेस अभी बहुत कम है, स्टार्ट हुआ है बट बहुत कम है। और थर्मल पावर प्लांट मतलब हम कोल यूज करके सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। और जब हम कोल यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल एमिशन जो है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री से होता है। दूसरा होता है हाइडल पावर प्लांट। जब आप हाइडल पावर प्लांट यूज कर रहे होते हैं तो आपको कम से कम 30 से 35 किलोमीटर का एरिया खाली करवाना पड़ता है। शायद आप जानते होंगे हाइडल पावर प्लांट के बारे में। तो हाइडल पावर प्लांट से कितना प्रॉब्लम हो रहा है? इतना लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। इट इज इजी। ये इतना सस्ता है कि हम जब चाहे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते रहें? शायद नहीं है। शायद हम लोगों ने सोचा ही नहीं इसके बारे में कभी कि इलेक्ट्रिसिटी शायद इतना सस्ता नहीं है, इसलिए इसको जो है थोड़ा संभल के खर्च करें, है ना। ये भी एक बैंक बैलेंस ही है। जिस दिन लाइट नहीं रहती तो हमारी क्या हालत होती है, आई थिंक आप सब समझ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट इसमें। मैं थोड़ी चीजों को ऐड किया। मैंने इसमें कोई भी डेटा नहीं लिया है, कोई भी कहीं पे आपको कोई एक शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ पिक्चरों के माध्यम से कोशिश की है कि किस तरह से इन्वायरमेंट को सेव किया जाए, नई चीजों का यूज किया जाए और इन्वायरमेंट को सेव किया जाए। जो ओल्ड सिस्टम है उनको रिड्यूस किया जाए। हमारे गांव में आज भी ये क्लासिकल चूल्हे यूज होते हैं। फिर मोदी जी को ध्यान आया तो उन्होंने कहा कि भाई एक उज्ज्वला योजना लाओ और सारी बहनों को गैस प्रोवाइड करो, एक बार फ्री में दे दो, दोबारा देखेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ है? आप सोचते होंगे सर हम 21वीं शताब्दी में रहते हैं, चूल्हा कौन यूज करता है? क्योंकि आप सिटी में रहते हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आता। यदि आप में से कोई लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं तो मेरी बात से एग्री करेंगे कि आज भी 80% घरों में ये चूल्हा जलाया जाता है और इसके लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। और लकड़ी यदि आप पेड़ काटते चले जाएंगे तो एनवायरमेंट सेविंग कहां से होगी? ये सुनो। दूसरा एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर की कॉस्टिंग
बढ़ती जा रही है क्योंकि सोर्सेस बहुत लिमिटेड है। जब सोर्सेस लिमिटेड होते हैं तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। तो करें क्या? मैंने जैसे कहा था रिड्यूस, इन चीजों को रिड्यूस करें और उसकी जगह हम जो है बायोगैस स्टोव, गांव के लिए जो सबसे बेस्ट थिंग है वो है बायोगैस। क्यों? क्योंकि गांव में जो है बायोगैस बहुत मिलता है, उसको यदि हम कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिसिटी में और बायोगैस स्टोव यूज करें तो ये बेस्ट सूटेड होगा इंस्टेड ऑफ क्लासिकल चूल्हा। दूसरा है एलपीजी। एलपीजी जैसे मैंने कहा कि लिमिटेड सोर्सेस है तो बेटर होगा कि हम सोलर बेस्ड सिस्टम यूज करें। ये सिस्टम सिर्फ फोटो में नहीं है, ये एक्चुअल यूज में है। ये सारी फोटो गूगल से ली गई है, मेरा कुछ भी क्रिएटिव नहीं है, लेकिन ये सिस्टम ऑलरेडी यूज में है। तो हम इस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये फोटो देख के भी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पेड़ों की कटाई अंधाधुंध चल रही है और इतनी लेवल पे चल रही है कि जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। हमारे शिक्षाविद कॉन्फ्रेंस के यहाँ बात करते हैं, डेटा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का पॉलिसी बिल्कुल अलग है, लोगों का पॉलिसी बिल्कुल अलग है। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने मुनाफे के लिए पेड़ों को काट रहे हैं और जब पेड़ काटेंगे, अच्छा ये तो उनका प्रॉब्लम हो गया। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है पेजेस यूज करना। हम आज भी क्लासिकल थिंग्स में मींस पेजेस यूज कर रहे हैं। इन एवरीवेयर वी आर यूजिंग ओनली द हार्ड कॉपी और जब आप हार्ड कॉपी यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम विद सोलर ऑपरेटेड सिस्टम। मैं यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा हम जो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। तो यदि मैं यहाँ फोटोज आप देख सकते हैं, सोलर ऑपरेटेड सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सिस्टम रिसेंटली आया है और ये बैटरी की तरह बैकअप है। आप कहीं पे भी लेके चले जाइए, जैसे आप बैटरी बैंक लेते हैं मोबाइल के लिए, आप लैपटॉप के लिए बैटरी बैंक लेके जा सकते हैं। यस, पोर्टेबल। थैंक यू सर। तो हम ये सिस्टम यूज कर सकते हैं। मेरा दूसरा कंसर्न है व्हीकल्स के। मैं अपनी जनरल लाइफ में जो चीजें यूज कर रहे हैं मैं उन्हीं पे फोकस किया हूँ। मैं बाहर की चीजों के बारे में नहीं जानता, तो मैं चाहता हूँ कि जो जनरल लाइफ में हम चीजें कर रहे हैं उन्हीं को यदि चेंज कर दें तो बहुत सारी चेंजेस अपने आप आ जाएंगी। तो यहाँ डीजल व्हीकल्स जो है हम लोग डेली यूज कर रहे हैं, अब उनकी जगह पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए। आप कहेंगे सर जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इतना महंगा है, ना चार्जिंग स्टेशन है ना कुछ है, आप उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि आज की स्थिति संभालने के लिए इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। आज संभाल लेंगे, बाद में कुछ नया भी लाना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के लिए यही सोल्यूशन है। ये पिक्चर भी देख के आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन चल रही है ना भाई साहब, ये कहाँ से पिक्चर ले आए आप? ये पुरानी है। तो मैं बता दूं ये नई ही है, ये पुरानी नहीं है। और जो छोटी लाइनें होती हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ अभी भी डीजल ऑपरेटेड सिस्टम यूज किया जाता है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि 1 किलोमीटर ट्रेन चलने के लिए जो पैसेंजर ट्रेन रहती है उसको 5 से 6 लीटर डीजल की जरूरत होती है, जबकि जो गुड्स ट्रेन होती है जिससे सामान की ढुलाई होती है उसमें 11 से 12 लीटर जो है डीजल की जरूरत होती है। अब आप सोचिए, आप 1 लीटर पेट्रोल से 20 किलोमीटर की कार चला रहे हैं और यहाँ हम 5 लीटर डीजल यूज करके सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रेन चला पा रहे हैं। तो कितना पॉल्यूशन कर रहा है ये और कितना ज़्यादा कॉस्टली है। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सोलर ऑपरेटेड जो ट्रेन सिस्टम है इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। तमिलनाडु में ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है और भी जगह पे जो है, जैसे तमिलनाडु में एक एयरपोर्ट ही है जो पूरी तरह से सिर्फ सोलर पे चल रहा है और एक ट्रेन भी है।
ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। दूसरा मेरा कंसर्न है जो पावर प्लांट है। पावर प्लांट जहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हम एकदम से इनको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन स्लोली हम इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं और इनकी तरफ जा सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में स्टार्टिंग कॉस्ट ज़्यादा है, जैसे कि सोलर की कॉस्ट आपको पता है ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसे ही एक बार हम इसको यूज करना शुरू कर देते हैं तो चूंकि यहाँ पर किसी तरह का फ्यूल कॉस्ट नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, तो धीरे धीरे इसकी कॉस्ट जो है अपने आप रिड्यूस होती चली जाती है। यहाँ जो है थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पे कोल बर्न करते हैं और कोल भी जो है हाई ग्रेड का होना चाहिए। यदि लो ग्रेड का करेंगे तो वो ज्यादा एस कंटेंट करेगा और उस केस में ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ये पिक्चर बहुत आम है हमारे दिल्ली, पंजाब और इसके आसपास के लिए। पराली जो है लोग जला देते हैं, ये भी एक बड़ा कंसर्न है पॉल्यूशन का। इसको जलाएं नहीं, इसको रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल करके हम बायोमास जो सिस्टम है उसका यूज करें और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, मैक्सिमम 2 किलोवाट 3 किलोवाट तक ही हो पाती है। अब इसमें क्या हम कर सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं, गांव के जैसे 10 घर हैं या 20 घर हैं, उनको मिला करके एक हम प्लांट बनाएं। उनकी जरूरत कम होती है, हमारे से तो कम ही होती है, मेरे ख्याल से कम होती है। तो यदि वो 10 या 20 लोग मिलकर के एक प्लांट रेडी करते हैं तो उनके लिए 3 किलोवाट या 4 किलोवाट की एनर्जी जो है वो सफिशिएंट है, आराम से वो उसको चला सकते हैं। ये प्लास्टिक के डिब्बे भी आप देख रहे होंगे, कल सर ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा व्याख्यान भी दिया था और मुझे समझ में आया कि ये कितने हार्मफुल है, लेकिन हम इनको भी यूजफुल में बना सकते हैं। यूजफुल क्या कर सकते हैं कि हम इनसे रिसाइकल करके और इनसे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और जो स्मॉल यूजर्स हैं उनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग करके इनको ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ग्रिड कनेक्टर सिस्टम बहुत ही यूजफुल है और इंडिया में इस समय ग्रिड कनेक्टर सिस्टम ही चल रहा है, तो हम इसको भी यूजफुल बना सकते हैं। इसके बाद ये डिजिटल होम नेटवर्क, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि जैसे ही मैंने रूम पे गया और मैंने देखा कि किस साइड की लाइटें जल रही, समझ में नहीं आ रहा कि किसको क्या यूज है। आप जो है इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बॉदर नहीं होते, यदि बिल नहीं आए ना तब तो और नहीं आए। वो तो अच्छा है कि अभी गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया और थोड़ा बिल आने लग गया तो आप सबको थोड़ा डरने लग गए, भाई बिजली का रेट ज्यादा हो जाएगा तो इससे अच्छा स्विच ऑफ करो। लेकिन कई बार हम लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग जो नॉर्मल हमारा सिस्टम है उसको यूज ना करें, उसकी जगह हम स्मार्ट होम यूज करें। स्मार्ट होम जो है इसमें सेंसर लगे रहते हैं और ये हमें बताता है कि इस रूम में कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जरूरत है, उतने वॉट का ही बल्ब लगाइए वहां पे। अननेसेसरी बड़ा बल्ब लगाने का या डेकोरेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये IoT बेस्ड सिस्टम है। इसमें हम यदि मान लीजिए किसी वजह से घर से निकल गए और घर की कोई भी अप्लायंसेस या लाइटें ऑन रह गई तो आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि कोई सिस्टम ऑन तो नहीं है। यदि ऑन है तो आप जहां कहीं हैं वहीं से स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं अपने घर से, अपने निजी लाइफ में हम डेली बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये बहुत इजी सिस्टम है और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। एक बार आप इसके बारे में सोचें। देन बात आती है रीयूज की। रीयूज का मतलब क्या है कि यदि कोई चीज हो ही रही है उसको मैं नहीं रोक पा रहा हूं तो कम से कम उसको इस तरह से कर दूं कि वो मेरे फिर से उपयोग में आ जाए।
मेरी लाइफ में उसका फिर से कुछ ना कुछ यूज हो जाए। तो ये एक थर्मल पावर प्लांट से जो राख निकलती है, हिंदी में बोला राख, इंग्लिश में है, तो उसको क्या करें हम रोड बनाने में या ब्रिक्स बनाने में चेंज करें। जो नॉर्मल ब्रिक्स बनती हैं उसकी प्रोसेस बहुत लॉन्ग है और कॉस्टली है, जबकि यहाँ से यदि हम ब्रिक्स बनाते हैं तो डायरेक्ट ब्रिक्स में कन्वर्ट करके और डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसको पकाने की जरूरत नहीं है, जैसे वो रेड वाला जो ब्रिक्स आता है उसको बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, वो सब की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट एक बहुत ही मुश्किल प्लांट है जिसमें बहुत सारा एरिया कैप्चर रहता है और बहुत सारा वाटर जो है वेस्ट हो जाता है। अब उसको क्या करें? उसको दो तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला हम यूटिलाइज कर सकते हैं इरिगेशन, जो इरिगेशन के लिए हम यहाँ पे कैनल्स बना सकते हैं और उस वाटर को इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, सेम वाटर को हम वाटर ट्रीटमेंट करके पीने योग्य बना सकते हैं और जो आसपास के एरिया हैं उनको पीने के लिए वाटर सप्लाई दे सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द रीयूज सिस्टम एंड देन रिसाइकल। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल सिस्टम, जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिगर के पास आके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले इस फिगर को देखिए। इस फिगर में क्या है, जैसे कार, फर्स्ट फिगर लेफ्ट साइड, कार जब आप देखे होंगे जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर जब रेड लाइट आता है तो उस समय 100 कार्स एक साथ क्यू में आ जाते हैं। अब वो 100 कार्स के वेट से हम वहां पे क्या करें, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर लगाएं और वो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर वेट से क्या होता है, जब उसका डायमेंशन चेंज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसके वेट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से कनेक्ट कर दें सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम डिफरेंट सिस्टम है, मैं फिर बता दूं, इसका सोलर से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम यदि सोलर के साथ कनेक्ट कर दें तो ये एक तरह से हाइब्रिड कॉम्बिनेशन बन गया और उस हाइब्रिड कॉम्बिनेशन को हम ले जाकर के कार जो चार्जिंग, अभी जो इलेक्ट्रिक कार आ रही है उनको चार्जिंग में यूज कर सकते हैं और वही कार अगेन हम अपने ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये एक रिसाइकल सिस्टम जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि यदि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको यूजफुल बनाना पड़ेगा। अभी तो बहुत कॉस्टली है डेफिनेटली, लेकिन यदि हम उसको सही तरीके से यूज करें तो और भी इन्वेंशन किए जा सकते हैं और एक ये उसका एग्जांपल है। और मेरा लास्ट ये गांव का सीन है। आप सभी लोग जानते हैं गांव में बहुत सारे क्रॉप वेस्टेज रहते हैं और एनिमल वेस्टेज रहते हैं, उनको यदि हम रिसाइकल करें, ये आप लोगों ने प्लांट गांव में देखे होंगे, बायोगैस प्लांट, इनको सही उपयोग करके हम दो काम कर सकते हैं। एक तो खाना बनाने के काम आता है, दूसरा इलेक्ट्रिफिकेशन के भी काम आता है। लोगों को एक्चुअली कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उनको लगता है कि ये जो बायोमास है इससे जो गैस निकलती है उससे सिर्फ खाना ही बनाया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जा सकता है। दूसरा, इसका जो रॉ मटेरियल निकलता है आफ्टर प्रोसेस, वो ये खाद जो है, जो इसको आप ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारा चल रहा है ऑर्गेनिक फूड, तो वो ऑर्गेनिक खाद जो है ये, इसका उपयोग हम जो है अपनी फसलों में कर सकते हैं और फिर से जो फसलें उगेंगी उन्हीं फसलों को फिर से हम रिसाइकल करके ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। So thank you so much to all of you for listening.